A big hello to my YouTube family. Welcome to DIWA classes. This is DIWA Wadwani, your commerce teacher. Today we'll be studying the specimen paper of commerce for 2025 examinations for class 12 ISC, जिसका हम लोग आज part 2 पढ़ेंगे. We already did part 1, that is section A, जिसमें हम लोग ने 16 marks के question solve किए थे. Now we'll move towards part 2. Okay, so it starts from section B. That says the first question here says that you have to illustrate any four ways by which comprehensive planning contributes to goal alignment within different levels of business organization. Organization के जो different levels होते हैं उसमें how comprehensive planning जो है it is contributes to goal alignment means all in all आपको importance of planning जो है वो यहाँ पर समझानी है. ठीक है, तो वील मूव टुवर्ड्स द आंसर की जो इन्होंने ऑलरेडी दी हुई है. तो व्हाट थिंग्स हैज बीन सेंट, सबसे पहला कि प्लानिंग जो है वो इट सेट्स आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग. सबसे पहला इसमें है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शंस. ठीक है, प्लानिंग डिक्रीजेस द चांसेस ऑफ रिस्क. तो जितने भी इंपॉर्टेंस है रिगार्डिंग कि अगर हम अभी प्लान करते हैं तो फ्यूचर में उसका क्या मुझे बेनिफिट होगा वो यहाँ पर यू हैव टू टेल. Planning decreases overlapping and wasteful activities and you have to explain them as well. ठीक है, फिर planning encourages innovative ideas and planning aids decision making. So these things you have to explain. You have to take any 4 points and each point must be explained briefly. मतलब in hardly 3 to 4 lines. बहुत ज्यादा भी बड़ा बड़ा नहीं और बहुत ज्यादा छोटा छोटा भी नहीं करना है. Then the next question says after the part of planning, this was of 4 marks and you have options in that. ठीक है, पहला question is of 4 marks, either this or the next one. The next one says you have to outline 4 benefits of decentralization that enhance the overall resilience of an organization in the face of unforeseen challenges. कि अगर अनफोर्सीन चैलेंजेस आ जाते हैं तो उस टाइम पर हाउ डिसेंट्रलाइजेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. दिस यू हैव टू टेल इन योर आंसर. यू हैव टू टेल 4 पॉइंट्स ऑफ इट. ओके, तो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन इन केस ऑफ अनफोर्सीन चैलेंजेस ओनली इन द इवेंट ऑफ दैट कि सबऑर्डिनेट्स आर मोटिवेटेड and or there is satisfaction of human needs, then there is growth and diversification जिसमें ये help करता है. क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एफिशिएंट कम्युनिकेशन में हेल्प करता है. We have decentralization, we don't have to ask much from our bosses due to which there is efficient communication. There is ease of expansion, हम लोग अपना business को expand कर सकते हैं. There is better supervision and control and there is top executives can focus on important matters. ओके तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो इसमें लिखा हुआ है कि अब ये इसका मेन पार्ट है दैट यू शुड नो पॉइंट्स. तो यू आर एबल टू राइट इंपॉर्टेंस में. तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ एनी 4 बेनिफिट्स. ठीक है, इन द इवेंट ऑफ अनफोर्सीन चैलेंजेस दीज शुड नॉट बी जेनरिक बेनिफिट्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब एकदम ही नॉर्मल बेनिफिट्स नहीं होने चाहिए जो आपको स्पेसिफिक इवेंट्स में पूछे गए कि हाँ उस टाइम पर डिसेंट्रलाइजेशन क्या रोल प्ले करता है इन केस ऑफ अनफोर्सीन चैलेंजेस, तब वो आपको मेंशन करना है यहाँ पर. देन ईच बेनिफिट शुड बी रिटन इन अ कंप्लीट सेंटेंस एंड नॉट फ्रेजेस. जैसे यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये फ्रेजेस में ही लिखा हुआ है. यू नीड टू मार्क दिस पॉइंट वेरी क्लियरली इन योर माइंड दैट ये जो है ये फ्रेजेस में लिखा है. तो आप उसको सेंटेंस फॉर्म में कैसे लिख सकते हो? इट लीड्स टू ग्रोथ and diversification, or it helps in growth and diversification. It helps in effective communication. There is ease of expansion. There is better supervision and control. तो आप उसको पूरे statement form में लिखोगे. It should not be in single small phrases. Then moving towards the next part, the next question that says question number 3. Question number 2 में either of the following you have to do. Then question number 3 that says elucidate any 4 factors affecting capital structure of a company. तो that you have to tell कि जो भी 4 factors होते हैं any 4 factors. Okay, and this is also of
4 marks. So you can mention these points. Factors affecting capital structure, that is business risk, industry averages, company's tax status, application of financial models, expected cash flows, and in all of these you have to mention any 4 points and you have to explain it also. ठीक है, and that affect the structure of a joint stock company. See, और overall हमें क्या समझ में आता है इससे कि points तो आपको नहीं लिखने, either mention the points, write it in main heading and the explanation of it, or you can write it in the form of statements also. Then moving towards the next one. Fourth question. Fourth question says that background tech solutions, a rapidly growing startup company, has faced a challenge of attracting and retaining top talent in the competitive market. To address this, the company decided to implement a share program aimed at rewarding and incentivizing key employees and directors. So आपको ये इसमें बताना है, see this, there is nothing to explain in this. एक कंपनी है, वो ये कह रही है, वो ये चाहती है कि क्योंकि वो एक रैपिडली ग्रोइंग स्टार्टअप है, ठीक है, वो टॉप टैलेंट को अपने पास नहीं रिटेन कर पा रही है, वो उसको रिटेन भी नहीं कर पा रही है, अट्रैक्ट भी नहीं कर पा रही, ना बहुत अच्छे लोग अप्लाई कर रहे हैं, ना वहां पर रुक रहे हैं. तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि हम एक शेयर प्रोग्राम यूज करते हैं जिसमें वी विल बी रिवॉर्डिंग जो की एम्प्लॉयज है या फिर डायरेक्टर्स है, उनको हम क्या करेंगे, कुछ शेयर्स इशू कर देंगे. अपनी कंपनी के शेयर्स इशू करने का क्या मतलब होता है कि मेरी कंपनी में अब वो सिर्फ एक एम्प्लॉयज नहीं है, दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे हैव शेयर्स, दे कैन क्लेम प्रॉफिट्स एंड दे कैन participate in the management. So you have to tell what the name and explain the type of share that can be issued. So the kind of share that can be issued is sweat equity share. Okay, और इसी के ही बारे में you have to explain it, that we will be doing here. The next question that says, that is the question number 4. तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हो. The first one is that is sweat equity shares that can be issued. Then these are the type of securities जो कंपनी इशू करती है अपने एम्प्लॉयज को और डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पर या फिर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश. ठीक है, सम टेक्निकल नो हाउ उन्होंने प्रोवाइड किए या कुछ भी अच्छा, तो उसके लिए हम उनको ये शेयर्स इशू करते हैं. इसका पर्पस क्या होता है, so that we can motivate employees so that they can work harder for company's success, and they can be issued for providing know-how. अगर वो कुछ अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर रहे हैं या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेलेबल करवा रहे हैं, उसके लिए कोई फॉर्मूला और समथिंग दे हैव गिवन. So these are issued to employees and directors and must be subject to lock-in period of 3 years. कि at least 3 years के लिए ये issue किए जाते हैं from the date of allotment. And during this period, these shares cannot be transferred or sold by that employee to whom the shares has been issued. Okay, और अब इसका जो की है, जो आपको पॉइंट समझना है, that is the answer must contain the underlined statements or parts. ये उसका कीवर्ड है. ठीक है, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, ये उसके कीवर्ड्स है. एनी अदर करेक्ट एक्सप्लेनेशन विल आल्सो बी एक्सेप्टेड, बट ये चीजें जो है दैट शुड बी मेंशन्ड. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. ये पूरा 4 मार्क्स का था, तो आपको उसको द मेन आंसर बताना है कि ये कौन सा काइंड ऑफ शेयर है, और उसके बाद कम से कम उसमें 4 पॉइंट्स लिख देना सुंदर सुंदर से. देन नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 that says that you, और इसमें भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ you have to outline any 4 fundamental characteristics of effective management in a business organization. Okay, so moving towards the next one. So that says, that is question number 5. एक मिनट, question number 5. The fundamental characteristics of effective management. First is goal oriented, pervasive, multi-dimensional. Okay, means it involves 3 domains: the work, the people, the operations. Continuous process है, group activity है, dynamic function है, intangible force है. अब इसमें what thing you need to know is that candidates जो है they are required to, means you people, the students are required. You can write any 4 characteristics, okay, in complete sentences and not in phrases.
Then moving towards the next one, that is again द पार्ट ऑफ केस स्टडी. सबसे पहले चीज इसमें बोली गई है. अब देखो यहाँ पर हमें इतना समझ में आ रहा है दूर से देख करके कि ओके समथिंग हैज बीन आस्क्ड इज अबाउट द प्रिंसिपल्स. ठीक, तो हम लोग इसको उसी चीज को माइंड में रख करके पढ़ते हैं. यू हैव टू टेल दैट एक्स वाई जेड एक कंपनी है एंड इट इज फेसिंग चैलेंजेस रिलेटिंग द फॉलोइंग इश्यूज. सबसे पहले जो कम्युनिकेशन चैनल है वो वेल डिफाइंड नहीं है इन एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड बाय द मैनेजमेंट, जिसके कारण डिलेज हो रहे हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है. हम लोग ने क्लियरली डिफाइंड चैनल वाला एक प्रिंसिपल पढ़ा था ऐसे डायग्राम वाला, तो वो कौन सा था? दैट इज स्केलर चेन. देन तो फर्स्ट वन ये हो गया. दूसरा बोला गया है द वर्क प्लेस वॉज डिसऑर्गेनाइज फॉर बोथ एम्प्लॉयज एंड मटीरियल रिसोर्सेज अफेक्टिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी. तो ये क्या हो गया? दिस विल बी नोन एज ऑर्डर. ठीक है, राइट पर्सन एट द राइट जॉब and right the resources at the right place. So which principles? Obviously two are there, two separate principles are there, can be applied to overcome the above challenges. You have to explain these principles. These are of 2 marks each. Okay, तो the answer is first one is obviously scalar chain, जिसमें ये वाला diagram बना था that you are supposed to tell. इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक डायग्राम क्योंकि वो नहीं पूछा गया, बट इट्स जस्ट आई एम टेलिंग यू हियर कि यहाँ से ए, यहाँ पर आया ई और ये वाली रही लाइन ऑफ अथॉरिटी. ठीक है, तो फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन एंड दिस प्रिंसिपल वाज गिवन बाय हेनरी फियोल दैट नीड्स टू बी एनफोर्स्ड इन XYZ क्योंकि इट विल establish a chain of authority and communication from top to bottom in hierarchy and will be followed by managers and subordinates, जिसमें क्या होगा? There will be effective communication lines, a proper authority responsibility relationship will be there so that A can give orders to E and E can respond to A. Second one was order, जहां पर एवरीथिंग इज ऑर्डरली प्लेस्ड. ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्सेज जो है अपनी राइट प्लेस पर है एट द राइट टाइम और दिस विल एंश्योर कि जो भी रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूज हो रही है इन अ स्ट्रक्चर्ड पैटर्न. ओके, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन दीज टू प्रिंसिपल्स ब्रीफली एप्लीकेबल टू द गिवन सिचुएशन. देन मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. फोर डिस्टिंक्शंस, इससे पहले वाला क्वेश्चन. ओके, तो द क्वेश्चन नंबर 7. ठीक है, दैट इज ऑल्सो ऑफ 4 marks. You have to discuss the interplay of goal setting during planning phase and the use of these goals as benchmarks for performance evaluation in controlling phase. So यहाँ पर देखो इंटरप्ले का क्या मतलब होता है कि अगर हम प्लान कर रहे हैं तो उससे मेरा कंट्रोलिंग पर क्या अफेक्ट पड़ेगा, दोनों के बीच का रिलेशन, इंटरडिपेंडेंस आपको बतानी किन दो चीजों में? प्लानिंग के बीच में और कंट्रोलिंग के बीच में. ओके, so this you will tell this is also a 4 marks and you have to explain it also. So it will be written here as इंटरप्ले, जिसमें यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं. ठीक है, कि दीज टू प्लानिंग एंड कंट्रोल आर इंटरवेंट टुगेदर एंड दे आर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस दैट को एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. फिर क्योंकि प्लानिंग जो एक प्रोसेस के जैसे इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिव थिंकिंग एंड जजमेंट और कंट्रोलिंग इंश्योर करता है कि ये जितने भी थॉट्स और डिसीजंस है उनको हम डिजायर्ड एक्शन में कवर अप कर पाए. ठीक है, फिर कंट्रोलिंग जो है फीडबैक प्रोवाइड करता है फॉर प्लानिंग by identifying the areas for improvement. तो इसीलिए हमें जो है इन दोनों का इंटरप्ले, इंटरडिपेंडेंस बताना है. प्लानिंग ऑब्वियसली पहले होती है तो हम उसका जो इफेक्ट है वो बताएंगे कि अगर हमने ये किया, प्लानिंग की है, तो इसके कारण कंट्रोलिंग पर क्या असर पड़ रहा है. दिस वी हैव टू टेल हियर. कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द वेज कि कैसे प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है वो एक दूसरे को असर करती है. They must also discuss जो ये जो अंडरलाइन पॉइंट्स है टू ब्रिंग आउट इंटरप्ले. ओके, ये वाला जैसे ये जो अंडरलाइन पॉइंट है. एंड कोई और रेलिवेंट आइडिया दैट शोज द रेसिप्रोकल नेचर विल आल्सो बी एक्सेप्टेड. मींस आपको इन ऑल आपको 4 पॉइंट्स ऑफ इंटरडिपेंडेंस यू पीपल हैव टू शो. देन
आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन जो है मार्केटिंग और सेलिंग, ये तो बचपन वाला टॉपिक है, बचपन से लेकर के हम लोग इसको पढ़ रहे हैं. Again, in this also you can write any 4 points along with the basis of discussion. ठीक है, तो this we will be doing here. 12th one, 12th answer. एक मिनट. हाँ, ठीक है, तो these points are given along with the basis. यहाँ पर लिखा हुआ है that you have to write any 4 differences between marketing and selling as given, and it can be explained in paragraph 2. Need not necessarily be in tabular form. जरूरी नहीं कि table form में हो, but it's just क्योंकि आपकी book में दिया होता है, and it is very easy for you all to explain it in tabular form. So it is a suggestion from a teacher that you should do it in tabular form, and the basis of distinction should be common and clearly mentioned. कि ये जो है basis of discussion, sorry distinction, ये भी clearly mentioned होना चाहिए. कि अब यहाँ पर हम लोग scope की बात कर रहे हैं. इस scope में marketing का scope जो है वो varied है, इसमें multiple चीजें आती है, and selling का scope जो है वो narrow है, and it is only limited to the sale of product. ठीक है. Now we will move towards the next question. That says the next question. ठीक है. Now is the question number 9, and section C will be done in the next part. So question number 9 that says as packaging manager of a leading manufacturing company, you have to provide 4 specific features that you would take into consideration while packaging a स्मार्टफोन. ठीक है, तो उस टाइम पर अगर आप डिजाइन कर रहे हो अपने स्मार्टफोन के जो आउटर कवरिंग है, तो आप ये चीजें ध्यान में रखोगे दैट यू हैव टू टेल. जिसमें सबसे पहले आता है द फीचर्स ऑफ गुड पैकेजिंग. It should be convenient, attractive, compliance with the law, obviously, creative and original, economical, protective and durable, very important, communicative of the purpose कि हाँ जितने भी उसमें जैसे उसका नंबर होता है and all should be mentioned, environmental friendly होना चाहिए. Any 4 features in complete sentences which they will considered as a packaging manager, और कोई भी apart from all these will also be accepted. ठीक है, should be relevant, कुछ भी नहीं होना चाहिए, but it should be just relevant to the topic given. Then after this the last question for today, जो 9th question का ही option है, and this part we'll be doing in the next part. So as a marketing manager, दोनों में से एक करने. Again these are of 4 marks. As a marketing manager you have to explain any 4 objectives of advertising that you will familiarize a new sales team with, and during training and orientation. मतलब एडवर्टाइजिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग जो आप अपने न्यू सेल्स टीम से को जब मिलवाओगे सबसे, तब आप उनको ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस कराओगे कि व्हाई इज एडवर्टाइजिंग नेसेसरी. So this you have to tell to your own team. तो इससे कोई भी 4 points that you can take. First is कि भाई advertising क्यों जरूरी है, so that we can introduce a product, so that you can inform the product about the product to the customer. You can build your own brand, you can increase your sales, demand, engagement, expanding customer base or changing customers attitude. ठीक है, these 4 objectives can be taken, and apart from this any other relevant point will also be accepted. So this is all for today. I hope you all have understood. जो आपसे काउंसिल कहना चाह रहा है वो आपसे कहना चाह रहा है कि जो भी चीजें है उसको कुछ कुछ में तो एक्सप्लेन लिखा ही है, तो ऑब्वियसली उसमें पॉइंट लिख करके एक्सप्लेन करो. कहीं कहीं पर इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आउटलाइन जैसे दिया है, मेंशन दिया है, स्टेट दिया है, तो उन सारी चीजों में क्या आप कर सकते हो, यू जस्ट हैव टू राइट इट इन अ सेंटेंस. डू नॉट राइट एनीथिंग इन द फ्रेज. ठीक है, एक छोटे से फ्रेज में, जैसे ये एक वर्ड है, फ्रेज है, एक ये है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग फ्रेज करते हैं, जो जरूरी नहीं कि कोई भी एक मीनिंग क्रिएट करे. That cannot be a complete sentence. So zaruri nahi hai usme, so you are supposed to write it in a complete sentence only. Okay, the section C will be doing in the next part. Till then, keep preparing. Best wishes. Thank you.